In the previous video, we have completed ribs and rib cage and ultimately the axial skeleton. And now in this video, we are going to start the appendicular skeleton. And the first part of appendicular skeleton is pectoral and pelvic girdle. So this video में हम learn करेंगे pectoral and pelvic girdle. जैसे कि हमें पता है कि appendicular skeleton जो होता है which attach the main axis of our body laterally and उसे हम कहते हैं appendicular skeleton. Appendicular skeleton जो होता है it consists of girdles. Appendicular skeleton किससे बना हुआ है तो it consists of girdles and limbs. तो girdles कितने हैं तो दो girdles. One is pectoral girdle and second one is pelvic girdle. अब ये जो girdles हैं उसका काम क्या है what is the role of the pectoral and pelvic girdle जैसे कि pectoral girdle is shoulder girdle जो प्रोवाइड करते हैं स्पेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द लिम्स whereas जो pelvic girdle है उसे हम कहते हैं कि hip girdle it also provides the space for the attachment of hind limbs that is the lower limbs so क्या है appendicular skeleton में जो girdles है फर्स्ट जो girdles है कितने हैं तो दो है pectoral girdle and pelvic girdle कौन से pectoral girdle जिसे हम कहते हैं शोल्डर सेकेंड वन इज pelvic girdle जिसे हम कहते हैं हिप girdle अब जो इन pectoral girdle और pelvic girdle में जो बोन्स होते हैं बोन्स इसके bones of pectoral and pelvic girdle helps in the articulation of upper limbs and lower limbs हमारे जो upper limbs हैं and lower limbs हैं उनको space provide करते हैं for the articulation for the joining purpose कौन the bones of pectoral and pelvic girdle so bones of pectoral and pelvic girdle क्या करते हैं helps help किसमें help in articulation of help in articulation of upper and forelimb and lower and hind limbs upper and lower limbs so bones of pectoral and pelvic girdle helps in articulation of upper and lower limbs respectively. Right. This is the function of the bones of the pectoral and pelvic girdle. जो क्या करते हैं? Help in the articulation. Help in articulation like that. This is the girdle and this is the bones of the forelimbs. So it provides the articulation, right? Attachment, point of attachment. So first one is उसमें से first है first कौन सा तो we'll learn the pectoral girdle अब ये जो pectoral girdle है that pectoral girdle is formed by two halves first it is formed by two halves कितने बनी हुई है two halves फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ दिस इज माय पेक्टोरल girdle to which these limbs are attached so pectoral girdle जो है यहाँ से it is made up of one half and this is second half so it is made up of it is formed by two halves दो हाफ से बना हुआ है right? अब each half में क्या है each half consists of two bones कौन से each half consists of two bones first one is clavicle and second one is scapula कितने बोन है each half consists of two bones first one is the clavicle and second one is the scapula right दो बोन से बना हुआ है फॉर एग्जांपल दिस इज ये जो है this is clavicle long slender
बोन्स विथ टू कर्वेचर्स एंड उसे कहते हैं कॉलर बोन। एंड उसके पीछे देयर इज अ लॉन्ग, एक बड़ा बोन है, दैट इज लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। कैसा है? लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन ऐसा, which is situated dorsally in thoracic region. Dorsally, this is thoracic region, but thoracic, dorsally, in between second and seventh ribs. अगर आप ऐसा हाथ लगाओ यहाँ पे, तो आपका हाथ जहाँ टच होता है, वहां पे आपको ट्रायंगुलर फ्लैट बोन्स, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन दिखता है। कहाँ है? डॉर्सली है, पीछे है, थोरैक्स में। कहाँ पर? इन बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब्स। हमें पता है कितने रिब्स है, तो 12 रिब्स। क्लियर? पेक्टोरल गिर्डल is formed by the two halves, दो हाफ से बनी हुई है। उसमें से each half consists of two bones. Each half consists of two bones. First one is clavicle and second one is scapula. Consists of यहाँ पे लिखा हुआ two bones. कौन से? First one is clavicle and second one is scapula. Right? अब clavicle कैसा है? First, clavicle is long slender bone. Long है, slender bone with two curvatures. It is long, slender, long है, slender है, long slender bone with two curvatures. With two curvatures. Right? That is कैसा है? It's a long, slender bone with two curvatures. Curvatures मतलब with two curvatures. So it is long, slender bone with two curvatures. And उसे ही हम क्या कहते हैं? This is also called as collar bone. क्या कहते हैं? We call it as the collar bone. तो कितने होंगे? Clavicle दो, right? One in each half, second in another half. तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक हाफ। So one clavicle and one side. क्लैविकल कैसा है? लॉन्ग स्लेंडर बोन विथ टू कर्वेचर्स। यहां से स्टार्ट होता है। यस, लॉन्ग स्लेंडर बोन विथ टू कर्वेचर्स, दो कर्वेचर्स, राइट? उसे कहते हैं कॉलर। अब दूसरा जो है स्कैपुला। स्कैपुला एक ट्रायंगुलर बोन है, पीछे ट्रायंगुलर, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन्स। कैसा है? स्कैपुला इज लार्ज ट्रायंगुलर, और दूसरा फ्लैट है, ऐसा फ्लैट बोन। कहाँ है? सिचुएटेड डॉर्सली इन थोरैक्स, इन बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब्स। सेकंड रिब और सेवंथ रिब्स के बीच, बट नॉट वेंट्रली, डॉर्सल। सो सिचुएटेड कहाँ है? सिचुएटेड डॉर्सल, सिचुएटेड इन, और सिचुएटेड डॉर्सली, situated dorsally in thorax. In between कहाँ है? In between second and seventh ribs. Second and seventh ribs के बीच। So कैसा है ये? This is like that. Large flat triangular. Right? Large flat triangular. This has the one projection. At this point, it has a one projection. That is what it is called as a reach. The scapula of the pectoral girdle, that is the one half, has the reach. It has a reach, and that reach is known as, जो रीज है मतलब ऐसा कर्वे स्ट्रक्चर्स है, that reach and that elevated reach, and that is known as spine. उसे क्या कहते हैं? Spine. And through that reach, this clavicle articulate, articulate, right? Through that it articulate attach.
राइट। अब ये जो स्पाइन है, दैट स्पाइन और दैट रीच शोज द डिप्रेशन, ऐसा डिप्रेशन, देयर इज अ डिप्रेशन, ऐसा डिप्रेशन, this this spine has, क्या है, has a depression, डिप्रेशन मतलब दिस इज आवर हैंड, राइट, डिप्रेशन ये जो पार्ट है दैट इज डिप्रेशन, एंड उसे कहते हैं दैट डिप्रेशन इज नोन एज ग्लिनॉइड कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी। एंड इन ग्लिनॉइड कैविटी क्या होता है, इन ग्लिनॉइड कैविटी हेड ऑफ ह्यूमेरस बोन, ये जो बोन है यहाँ पे ह्यूमेरस, हेड ऑफ ह्यूमेरस is articulate, articulate or attached by forming the ball and socket joint। मतलब ये जो है that is the head, head of humerus bone जो यहाँ होता है, and यहाँ पे one depression है, ऐसा depression वहाँ पे joint होता है, and that is the ball and socket joint through which we can carry out the movement in all direction, 360-degree movement। So head of the humor is articulate by ball and socket joint, ball and socket joint, right? So very simple। when हम pectoral girdle स्टडी करेंगे तो दो बोन्स है, वन इज क्लैविकल जिसे हम कॉलर बन के बोन कहते हैं, and then second one is the large triangular flat bone which is situated dorsally thorax in between the second and seventh ribs, right? अब ये जो स्कैपुला है, स्कैपुला हैज द रीज उसे कहते हैं स्पाइन, एंड दैट स्पाइन हैज द डिप्रेशन, एंड दैट डिप्रेशन इज नोन एज ग्लिनॉइड कैविटी। एंड टू दिस ग्लिनॉइड कैविटी क्या है, टू दिस ग्लिनॉइड कैविटी द हेड ऑफ humerus bone fits। So it means the pectoral girdle का जो scapula bones है, it provides the space for the attachment of the head of the humerus bone, this bone, and ये joint है, that joint is ball and socket joint। So they have the spines, right? And उसे क्या कहते हैं, spines, or it is also called as acromion processes, right? This is also called as acromion processes or spines। and उसके अंदर एक रीच है, उसके अंदर एक ग्लिनॉइड कैविटी प्रोड्यूस होती है, एंड ग्लिनॉइड कैविटी में क्या, तो हेड ऑफ द ह्यूमरस इज फिट बाय बॉल एंड सॉकेट joint। So this is the pectoral girdle। Now second one is the pelvic girdle। So we learn the second pelvic girdle। तो हमें पता है कि pelvic girdle कैसा है, तो दूसरा नाम जो pelvic girdle को दिया है, तो another name for pelvic girdle क्या है, it is also called as hip girdle। तो काम क्या है, what is the role of pelvic girdle, the earlier I told, मैं पहले ही आपको बताया कि क्या काम है pelvic girdle का। the bone of the pelvic girdle help in articulation with the lower limbs। हमारे जो लोअर लिम्स है उसको स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर द अटैचमेंट, राइट। तो नेक्स्ट वन इज पेल्विक गर्डल। अब जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल इज फॉर्म बाय टू कॉक्सल बोन्स। कितने, इट इज फॉर्म बाय टू कॉक्सल बोन। फर्स्ट इट इज फॉर्म बाय कितने, दो, टू, कौन से बोन, टू कॉक्सल बोन, टू कॉक्सल बोन से बना हुआ है। अब ईच कॉक्सल बोन जो है, इट इज मेड अप बाय इट इज मेड अप ऑफ बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स। तो यहां पे लिखता हूं ईच कॉक्सल बोन, ईच कॉक्सल बोन जो है इज मेड अप ऑफ द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स, थ्री बोन्स के फ्यूजन से बना हुआ है। कौन से, इट इज मेड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स, फ्यूजन है, fusion of, it is made fusion of three bones। First ilium, second ischium and pubis,
each coxal bone of the pelvic girdle is made up of the fusion of three bones: ilium, ischium, and pubis. Right? जैसा कि ऐसा this is the ilium. Then to the this side, this is the ischium, and to the dorsal side, पीछे वाली side, there is a presence of this pubis. So ilium, ischium, and pubis. Right? से बनता है वन कॉक्सल, बनता है वन कॉक्सल। अब जो ये तीनों के तीनों जहां अटैच हुए हैं ये पीछे साइड से है, ये दीज थ्री बोन्स जहां अटैच होते हैं मींस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ दीज थ्री बोन्स वहां एक डिप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं एंड उसे कहते हैं एसिटाबुलम कैविटी। तो क्या होता है तीनों के बोन्स का द पॉइंट ऑफ फ्यूजन, द पॉइंट ऑफ फ्यूजन में वहां क्या है एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ दीज थ्री बोन्स देयर इज अ डिप्रेशन, there is a depression and that depression is known as acetabulum cavity। क्या है वो that is acetabulum cavity। ये जो थ्री बोन जहां अटैच हुए हैं तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यहाँ पे it develop a cavity, and through that cavity is known as acetabulum cavity। and acetabulum cavity क्या है तो जहां ये तीन बोन अटैच हुए वहां it develop the depression like that, and to that depression the hair of the femur bone attach by forming the ball and socket joint। तो acetabulum में क्या होता है तो acetabulum में क्या होता है तो head of femur or thigh bone, head of femur is attached, and that is also the consa joint है, that is also the ball and socket joint। consa है ball and socket joint। Right? So very simple, pelvic girdle is formed by the two coxal bone, one coxal bone and another coxal bone, right? And this coxal bone is formed by the fusion of three bones: ilium, ischium, pubis। So ilium, ischium and pubis is present dorsally पीछे साइड, यानी ये जहां मिलते हैं पॉइंट ऑफ फ्यूजन वहां दे डेवलप द डिप्रेशन एंड उसे कहते हैं एसिटाबुलम कैविटी। क्या कहते हैं एसिटाबुलम कैविटी, and to that acetabulum cavity the hair of the femur bone is attached by forming the ball and socket joint। अब देखो जो दो coxal bones है these two coxal bones attach ventrally, सामने से attach ventrally by pubic symphysis। अब यहाँ पे next an important two coxal bones attached to one another, attached कैसे है सामने से attach ventrally by pubic symphysis, by pubic symphysis, pubic symphysis, by pubic symphysis or pubic symphysis से क्या होता है it is formed by the pubic symphysis, right? So two coxal bones attached ventrally by pubic symphysis, मतलब दो coxal bones, this coxal and this coxal bones attached by the formation of pubic symphysis। क्या बना है तो pubic symphysis। So this is all about the pelvic girdle and pectoral girdle। In the next video we'll describe the limbs, that is the appendicular skeleton का second part limbs।